अस्सलाम वालेकुम। है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी हो शादमानी. This Bollywood song, sung for generations, sets even before my parents' time, sets an expectation of marriage for so many. A night full of pure, immense happiness, where the bride and groom smile from cheek to cheek, lost in the trance of the occasion. But then what? What of the happily ever after the fairy tales describe? Those same fairy tales, often told to children, but especially young girls, also too for generations, do little to guide them in this venture of their lifetime. In fact, the happily is often missing from so many marriage stories, for not only the lack of insights, but also the sheer unrealistic expectations that these stories tell. Today, we speak to three women who sit on the summit of MashaAllah successful marriages, notable not only in their longevity, but also in the quality of those years. Meet Ghazal Rehman, Farhana Omarzai, and Dolly Khalid. Assalamu alaikum, ladies. Assalamu alaikum. Okay. So, I would like to take this opportunity for you guys to just introduce yourself, what you do, and mashallah, how long you have been married. Okay, We can start with yeah. Ghazal. Assalamu alaikum, everyone. My name is Ghazal Rehman. I've been married for 20 years, plus 20 plus years, and you can call it happily married. Mashallah. Assalamu alaikum, Farhana Omarzai. I have been married from last 25 years and my 25th anniversary is coming soon. Oh, happy anniversary. Thank you. Happy anniversary, mashallah. Dolly? Assalamu alaikum, everyone, and good morning. My name is Dolly, and I work for a bank, and I'm operational manager. And it's almost 34 years. We have been married, happily married. We have two kids. Daughter is Maliha, and son is Hamza. Mashallah. Mashallah. Okay, great to meet you all. So let's start from the beginning. Jab we met, as they say. So, of course, ज़ाहिरी बात है कि हमारी culture में arranged marriage भी होती है और अब 2024 में, in fact, I would say आखिरी 10 साल से अब the taboo love marriages भी हो रही हैं. So, please tell us how you met your spouse and आप college में थे, school में थे, job कर रहे थे क्या? आप please बताइए कि कैसे आप सब मिले? Ghazal? Oh, I was working. I am business relationship manager for M&T Bank. But prior to this, I was in retail, so I was a branch manager. And my husband used to come there, and that's how we met. So, but meeting and getting it approved by the family, and so everything counts. It was like, yeah, he liked me, but it pushed through my family. Mashallah. Okay. And Farhana? Ji, I was working actually after masters. I have done herbal doctor certification from Pakistan. So मैं काम कर रही थी and then आपको पता है पाकिस्तान में जो स्टाइल है प्रपोजल घर पे आते हैं because it's a totally 100% arranged marriage. बट फर्स्ट टाइम जब मेरे हस्बैंड आए हमें देखने अपनी फैमिली के साथ तो आई वाज लाइक मैं बहुत बबली टाइप थी मैंने इतना केयर नहीं किया आफ्टर दैट मेरे पेरेंट्स से पूछा कैसा था लड़का मैंने कहा कौन सा लड़का सो उनका वो जो आया था मैंने कहा मैं तो देखा ही नहीं सो फिर नेक्स्ट टाइम जब वो आए फिर बात की एंड देन लाइक फैमिली अप्रूवल के साथ हमारी 5 दिन में शादी हो गई लाइक व्हेन आई सॉ हिम फर्स्ट टाइम ऑन द 8th day ऑफ दैट मेरी उनसे शादी थी 8वें दिन so it was a totally arranged marriage. Yes. Acha, mashallah. And Dolly? We were a very close family friend. So I was in college and he was getting ready for his job and career and everything, and their family approached us, my father. And then my father told me about everything. I was very close to my dad. So he explained everything. But it was arranged. Mine was like semi-arranged marriage. It wasn't arranged because I was able to decide yes or no.
And after that, we did talk to each other. We went a few time outside, for the dinner and this. And I took, like, we actually, both of them took like 2 years to decide. And when we were ready, I told my yummy abu that, I'm ready. So it was, mashallah, I was very lucky. My parents were very broad minded, especially my dad, and that's why this was the reason we are still here, because we did talk a lot about because my sister were married too, my brother, and same thing with him too. So whatever we saw their issue, we did talk, and that's why we are, mashallah, successful. Mashallah. I think Ghazal might be having some technical difficulties, but let's continue the conversation. So you actually, both of you have a good, I can approach this subject a little bit with both of you, because Farhana, you were working, and as you said that, kind of arranged marriage थी, और आप Dolly आप भी बताए थे कि आपके अब्बू ने मिलाया and stuff. So आप लोगों के opinion में, number one, do you think that age matters in terms of जब आप decide कर रहे हो तो ये factor कि हमने शादी करनी है, या basically the main factor होता है, like, एक second, I'm so sorry. Our tech is having a little bit of issues. Do you think age has? There you go. Okay. Do you think age has an effect on जब आपकी शादी होती है, like in terms of आपकी success आपकी marriage का, number one, and number two, arrange versus love. आप लोगों का क्या opinion है जब आप लोगों की शादी हुई थी versus अब आप लोगों की सोच, like what do you think in terms of arrange versus love, age? How do these things play a role in the success of marriage? Should I go first? Yes, please. Okay. So, age, मुझे लगता है कि it does matter. Closer to the age, and that's my own opinion, that बहुत ज़्यादा difference नहीं होना चाहिए. If there's a lot of difference, तो वो आपकी सोच फर्क हो जाती है. Like, that's what I feel. And, love or arrange, marriage is marriage. You have to make it work. It's a work in progress. You have to make sure that, you're working towards the betterment of it. And communication is the key in any relationship, and especially in marriage. Communication is a big part of it. So that's what I think. Like, age is, जैसे तुम्हारा आपका question था कि age, to me it does matter when you are in a relationship, because then you don't think alike. Thinking भी मिलने चाहिए ना आपको, age के साथ साथ thinking भी मिलने चाहिए. That's what I think. मैं सेकंड करूंगी गजल की बात को कि एज बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस जो होता है वो बहुत इम्पैक्ट करता है. सो आई मीन फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज लाइफ आई थिंक कि कुछ चीज़ें अगर हम फॉलो करें तो चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, आपकी जो है लाइफ जो है वो सक्सेसफुल होगी. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल के आपको ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी ज़रूरी है आपस में, एंड देन रिस्पेक्ट एंड कम्युनिकेशन, कोई भी आप कम्युनिकेट कर सकें. अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा सो आई विल से कि मे बी उसको बात समझ में नहीं आएगी, और कम डिफरेंस एज ग्रुप जो होगा वो आपकी बात ज़्यादा समझने की कोशिश करेगा, और ज़्यादा डिफरेंस होगा तो आई मीन उसकी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी. सो आई विल से कि मेरा ख्याल है कि एज ग्रुप जो है वो कम हो तो ज़्यादा अच्छा है. सही. And Dolly, That's true. That's true. But in certain level, So you don't want to be too close to each other. Like, nowadays, बच्चे चाहते हैं कि not too much difference, But 2-3 years difference, I love that, because then you are compatible to each other, and you understand well. Like Ghazal said, अब ज़्यादा difference होने से आप लड़की जो है ना वो ऊपर रह जाती है, आदमी नीचे रह जाता है, इससे ups and down उनमें शुरू हो जाते हैं. So it's better to have normal difference in age. But जब हम लोग getting married, it wasn't that stressful getting married, or no pressure. But nowadays kids has a lot of pressure, because उन्होंने करियर भी साथ रखना है, उन्होंने एज भी देखनी है, उनको कंपैटिबिलिटी भी चाहिए. सो दैट्स ऑल थिंग्स, उन पे ज्यादा प्रेशर आजकल के. आई एम थिंकिंग किड्स का, जो बिकॉज मेरी बेटी है बेटा है, उन पे ज्यादा प्रेशर है
कि जी किस तरह के उनके हो, एज ना डिफरेंस ज़्यादा हो, कंपैटिबिलिटी अच्छी हो. So this all matter, everything, age, compatibility, understanding, and like Farhana said, feelings, trust each other, this is all thing combined, successful marriage. I mean, I mean, 5 to 6 years का gap is good, but like जब हमारे शादी हुई थी, it was like 10 साल का gap, that was like no, no. वो बहुत मुश्किल था. But 5-6, like 3 to 5 is fine. Perfect, exactly, 4 to 5. well, Perfect. I mean, I think हर किसी का एक पर्सपेक्टिव है. आई थिंक हमारे कल्चर में स्पेशली कहते हैं, अब जैसे लाइक अगर आप बुजुर्गों की बातें सुने ना, तो कहते हैं कि लड़की ज्यादा जल्दी बड़ी हो जाती है, या लड़के जो होते हैं बहुत इमेच्योर होते हैं, इस तरह से उनको जरा आई एम सॉरी, मैंने सच्ची बात की. तो इस तरह की वो ज्यादा अक्सर बातें होती हैं, और अक्सर I'm sorry अल्लाह ताला. But anyways, basically जो मेन बात होती है कि ये जरूर कहा जाता है, बहुत पुरानी सोचें जो अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं, अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं. एक्चुअली कुछ सोसाइटीज, कुछ फैमिलीज में अभी तक कहते हैं कि एज गैप ज्यादा होना चाहिए. एंड on top of that, arrange versus love, I agree, arrange mixed with love is very necessary, because अब का वो दौर नहीं रहा कि आप शादी की रात पहली दफा एक दूसरे की शक्ल देखें. बिकॉज एक तो हमारा दीन भी ये कहता है कि ये एक क्या कहते हैं, राइट है आपका, नॉट ओनली देखना बट ऑल्सो बातचीत करना, ताकि आप देख सकें कि कंपैटिबिलिटी क्या है, राइट? Because So I agree with all your guys' points. Excellent. And on that age factor, jin log, I know again I'm gonna get a lot of flack for this, but कि जल्दी शादी कर लड़की, psychology says कि लड़की doesn't know what she wants until she's 25 years old. Psychologists, yeah. So like for those of the girls that often get married before that age, they don't even know what they want out of themselves, much less anyone else. But again, it's based on each individual and each opinion. We are just offering some insight. And remember, the parents used to say that, जल्दी शादी होगी, बच्चे भी अच्छे जल्दी बड़े हो जाएंगे, आपके साथ बनेंगे. ये टिपिकल जो था ना उनका, वो ब्रेन में घुस जाता है. लेकिन शुक्र है कि nowadays love marriage is more acceptable nowadays. Exactly. प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो गुनाह तो नहीं किया. Exactly. Exactly. All right. So coming on to that now, in terms of compromises and differences between individuals, right? Obviously, अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं, और हम लोग खुद भी ये रियलाइज करते हैं कि अपने हमारे बहन भाई जिनके साथ हम एक घर में बड़े होते हैं, एक ही सेट ऑफ पेरेंट्स हमें अक्सर रेस करते हैं, हमारी उनके साथ इख्तलाफात हो जाते हैं. मैं कोशिश कर रही हूँ तो बोले कि तो अगर आप सोचें तो जो हमारे स्पाउस होंगे, which again in our society a lot of us don't even know our spouses when we meet them, not that well at least. So how does one deal with the differences, number one, that the other individual has, and what does compromise in a marriage actually mean to each of you, and how does one approach it, frankly? Ghazal? Okay, so compromise, every relationship you have to compromise, right? आप काम करते हो, आपको अपने peer से compromise करना पड़ता है. बहन भाई, जैसे आपने बोला, बहन भाइयों से when you living in your parents house. And marriage, अब दो बिल्कुल different बंदे होते हैं, no matter कितना प्यार हो आपस में, no matter you were dying for each other before you got married. And after marriage, I said it's marriage, it's a work in progress. आपको compromise करना पड़ता है. And I think एक औरत को अल्लाह ने एक चीज नेचर में दिया हुआ है, to, if you want to use it, that you can change situation को आप turn around कर सकते हो. If you help, अपने love से, अपने अपने इरादों से आप कर सकते हो. तो अगर if you, और सबसे बड़ी बात है, it's not what you say, it's how you say it. Yeah, absolutely. So when you're saying something to somebody, if आप उनको yell करके बोलोगे, वो उन्होंने yell किया, आपने आराम से जवाब दिया, होता है, it's normal thing. अब सबसाइड करना चीजों को सीखें ना. हमारी औरतें ना जो sometimes think, oh, उसने चीखा, हम उससे डबल चीख सकते. That is not it doesn't work all the time, but that does not mean कि आप submissive होके रहो. आपको अपनी बात मनवानी चाहिए communication से. Have a nice communication and make the other person understand where you stand,
एंड यू शुड ऑलवेज स्टैंड टॉल. अपने आप को कभी नीचा नहीं समझना चाहिए. आई थिंक मियाँ बीवी की रिलेशनशिप जो होती है ना, वो नॉर्मल होती है, बराबर की होती है, 50-50. देयर इज लाइक 50% दोनों का उसमें शेयर होता है इन अ मैरिज, एंड दे बोथ शुड वर्क टुगेदर टू मेक इट वर्क. या बट आई विल से कि थोड़ा सा पेशेंस भी होना चाहिए, बिल्कुल. क्योंकि हम औरतें जो होती हैं उनको जल्दी होती है हर काम की कि बस अभी कहा रिजल्ट आउट, यस. सो समटाइम्स ऐसा नहीं होता और उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है. आप अपना जो भी बात मनमानी है उसको इस तरह हैंडल करें कि वो रिजल्ट आपके ही एंड में आपकी तरफ ही हो, यू नो. और द अदर थिंग इज कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आपस में मतलब कोई बात पसंद नहीं आती अपने हस्बैंड की, तो लाइक यू नो इट्स ओके. कभी कभी हमें भी तो उनकी बात पसंद नहीं आती, तो उनको भी हमारी बात पसंद नहीं आ सकती. तो आई विल से कि थोड़ा सा forgive each other, you know, be patient, and then you will get whatever you need. Dolly? Yeah, no marriage is perfect. There is going to be always compromises with each other, and then we should be coming on a middle ground. But people think हम लोगों ने शादी से पहले a lot of discuss कर लिया हुआ है, ये हो गया, लेकिन everything comes after when you staying in one roof. So वो doesn't matter कि हमने ये भी solve कर लिया, हमने ये भी कर लिया, वो भी no, nothing. जब आप इकट्ठे रहते हो together, then it starts. Compromises, sacrifices, respecting each other's feelings, then it starts. So And I think my point of view is respectful to each other is the first main factor. Because when you respect each other, you respect their feelings, you respect their ideas, you respect their relatives and everything. But at the end, in our society, women do making more sacrifices and more compromise, like Ghazal and Farhana said. It's always women's, but it should be changed. It should. Agreed. It should be. So It's a both side. It's both marriage sides. is exactly marriage is a level playing ground, and I think एक जो सबसे बड़ी बात है ना इंसान को किसी भी रिलेशनशिप में, भला वो शादी हो या आपके सिबलिंग्स के साथ हो या इवन दोस्ती हो, ego should not be a factor. Yes, Ego is the killer of love, in fact, and ego and with ego comes respect. मैं हमेशा कहती हूँ कि मोहब्बत रह सकती है जब तक इज्जत उसमें शामिल हो. Respect. जब इज्जत खत्म हो जाए, जब आप डिसरिस्पेक्टेड हो रहे हो, आप भला बिल फर्ज टूट के मोहब्बत करो, मगर आपकी वो खत्म हो जाएगी. Eventually it will die out. And learn to let little things go. Exactly. Yeah, don't agreed. अपने अंदर रख लो ग्रज, ये मुझे उसने ये कहा था, मैंने नहीं आज करना. Just let it go. थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल ऐसे, अपनी बिल्कुल life ऐसे. करोगे, उनकी तो लाइफ नहीं, अपनी लाइफ इजी करोगे. Exactly, सही बात है. So आप उसके मुतालिक ना सोचो. आपने से you want to be healthy, you want to live your life, you want to live it for your kids. So उनको थोड़ा सा जाने दे. Give them space. Yeah, I give them space. I say, you can go for dinner. I will go dinner. So we will be relaxed. And then when come back, then we realize, okay, that was right. She was right or he was right. So just leave them a little bit space, because we are two different human beings. Yeah, you have to pick your fight. I feel like हर चीज के ऊपर आप लड़ नहीं सकते. नहीं, तो कुछ let it go. you have to pick your life fight. कि कोई चीज आपको बॉदर कर रही है बहुत ज्यादा, तो आप उस पर बोल सकते हैं भाई ये मुझे बॉदर कर रही है. एंड एज आई सेड कि आप आराम से जो चीज कर सकते हो, लड़ने की क्या जरूरत है. लाइक समटाइम्स हम लोग जो होते हैं ना, गुस्से में आकर के एकदम से नहीं, वो अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए थोड़ा सा. और अगर औरत कंट्रोल करने लगे ना, तो आदमी जो होते हैं ना, फिर वो खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं. ओ शी इज बीइंग सो नाइस एंड बट वो भी मैं नहीं कहूंगी कि आप हर वक्त सुनते रहो उनकी, ये भी ना करो. थोड़ा सा burden, I think, yeah, like I will say, in my opinion, थोड़ा सा ये जो होता है, it needs to be mutual, the compromise, because अगर even if you have a personality of, I would say, the self-sacrificial personality, I volunteer as tribute type of personality. So eventually एक time आता है, आप कहते हो, damn it, I'm not going to volunteer as tribute anymore. So I think it has to go both ways. The compromise, the sacrifices have to go both ways. And it's not just about financial aspect, as many, I'm sorry to say, हमारे भाई लोग समझेंगे कि financial का हम ये,
it's actually about other things as well. Like for example, अगर आपकी बेगम का दिन अच्छा नहीं गया और उसका मूड नहीं है आपके boring news channel को देखने का, तो for God's sakes, let her watch a drama. Like things like that. Like give up a little bit. अगर वो give up इतना कुछ कर रहे हैं तो आप भी करें. I think it needs to be, again, coming back to, it needs to be a level playing field. I think मेरी for example मेरे husband जब भी job से वापस आते हैं ना, वो अपने कपड़े, which is I'm so, कपड़े वापस नहीं hang करते, वो उधर ही रख के ना, तो that's for almost 33 years. I let it go. मैं हर पूरे 10 साल तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया क्या क्या just put it back, your jacket, this and this. He said, okay, I was about to हमारी then fight. फिर मैंने कहा छोड़ो, जान छोड़ो, खुद ही उठा के रखो, बेहतर नहीं है. And I think I'm fine. And now he realizing that, I'm not like yelling or I'm not saying anything. Now he's trying to. He said, okay, I will put it back. I will be nice. I said, try to be nice, But that little things, let it go. And then, you will get the reward right away. बिल्कुल ऐसा ही है. Next, so another thing that we have. So Valentine's Day just passed. And in the words of my mama and everybody that I know that is more practical than I am, is a commercial holiday hai, and I know the story. Hello, former history teacher, so I totally know the story. I know that it is a commercial holiday, but still, with that said, there are certain things that I feel like one needs to do to keep a marriage going. And and not only the marriage going, keep the love factor in a marriage, right? So that's my next question. Like, how important, first of all, in the longevity of a marriage is that love and romance factor, whether it is whether it is these little tiny celebrations like birthdays, anniversaries, commercial holidays, or whether it is, singing, not if you can't sing, that at least sending a song, or giving koi poetry bhej do, ya koi achhe loves bol do, ya tareef karna. Yeah, and also to another length, another burden that is often kept on us, Desi women especially, is even keeping yourself up to par. Like agar aap apne aap ko watch kar rahe ho, हर रोज शावर ले रहे हो, इस तरह की चीज. लाइक हमारे कल्चर में स्पेशली लाइक एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट किया जाता है कि आपकी शादी हो गई है तो अभी तुम अब क्या फायदा मेंटेन करेगा. व्हाट डू यू मीन अब क्या फायदा मेंटेन करेगा, मैं अपने लिए कर रही हूँ. मगर इट्स नॉट अबाउट अब क्या फायदा मेंटेन करेगा. You're doing it for your spouse, because obviously number one, men are visual, but guess what, women are visual too. So then these types of things, how important do you think ishq mushk, romance and the love factor is important? Not just the practicality, nikah nama factor, the love factor is important in the longevity of a marriage. I'll go first again. It's very, very important. The spark, you can have to keep the spark going. I know हमारी देसी औरतें जो होती हैं, मर्द भी, I don't know about them much, but like, वो सोचती शादी होगी बस क्या है. No, शादी हो गई, you have to keep it going. You have to go out on, like, we make sure that we go out, just me and him, for a date. Yes. उसमें हम किसी की बातें नहीं करते. We'll just enjoy the dinner, enjoy the, ambience या कुछ भी, like together. Yeah, with my husband, he forgets my birthday, forgets anniversary, forgets everything. Always. My first anniversary, when he forgot, I was like in shock. After that, shock नहीं आया क्योंकि वो भूल गए थे, हमेशा भूल जाते. बट हाँ, बर्थडे उनको बेटी या बेटा याद दिलाता है, एनिवर्सरी पे अब बेटा ही केक ले आता है मेरा. लेकिन बट ही डज सो मच ऑन एवरी अदर डे. लाइक चलो आज यहाँ चलते हैं, चलो आज ये कर लेते हैं. देयर इज थिंग्स like जो I feel के I don't need a special day to celebrate something. Like हमें जब time मिलेगा, we'll do something together. Like just going and watching a movie with him. You have to enjoy your partner. अब बातें करके अच्छी उनकी हर बात तो आपको मतलब समटाइम्स होता है कि बोरिंग मूवी देख रहे हैं कि मेरे बैठ कर देखने का दिल नहीं चाहता, तो वी फाइंड सम मूवी जो हम दोनों एंजॉय करें. So you have to create that, and sometimes men, they don't create, women have to create that. And I do like create, like doing things just me and him to have that moment together. और उसमें कोई ऐसी बात ना कहूँ. एंड आई मेक श्योर के समटाइम्स होता है ना, हम बातें इधर उधर की शुरू कर देते हैं, तो आई डोंट टॉक अबाउट अदर पीपल, अदर थिंग्स. जस्ट नॉर्मल एंजॉय करना, खाना एंजॉय करना, बातें करना.
So that makes it like, oh, you're still young and you're still enjoying that moment together. आपने मुझे एक बहुत ही पुरानी बात याद दिला दी। जब बच्चे आपके होते हैं, स्पेशली यहाँ रहते हुए, इतनी लाइफ आपकी मुश्किल होती है, क्योंकि बच्चों को देखना और फिर आप अपने ऊपर बिल्कुल भी इतना टाइम स्पेंड नहीं करते। तो जब हमारे बच्चे छोटे थे, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्लान किया, हम लोग एक मूवी देखने जाते हैं। मेरी फ्रेंड ने कहा, मैं बेबी सिट कर लूँगी, तो तुम लोग चले जाओ। अभी मूवी का क्लाइमैक्स ही चल रहा था, कॉल आई, जनाब अलीना जो है वो चुप नहीं हो रही, बहुत रो रही है, क्या करना है? और मैंने कहा, ज़हर अब मुझे मूवी नहीं देखनी, मुझे घर जाना है, अपने बच्चे को देखना। एंड ही वाज़ लाइक, कुछ नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा, नहीं, नो, नो, आई हैव टू गो बैक, आई हैव टू गो बैक। सो उसके बाद फिर इट्स लाइक बहुत एक बड़ा गैप आया 10 साल का, कि हम कभी जा नहीं सके। बट फिर उसके बाद फिर अब हम लोग जाते हैं, और मेरा ख़्याल है कि ये स्पार्क होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्योंकि आपकी लाइफ़ बोरिंग हो जाती है, एक ही रूटीन चल रहा है, और लगता ही नहीं है कि उसमें कोई मतलब कोई स्पार्क है। तो ग़ज़ल सही कह रही हैं कि क्रिएट करना चाहिए, मगर हमारे यहाँ मेरे हस्बैंड क्रिएट करते हैं ज़्यादातर, मोस्टली। मैं वेट करती हूँ। That's nice. हाँ, At least somebody is doing it. या सो लाइक मतलब कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चाहते हैं, कि हर वक़्त डिमांडिंग बहुत होते हैं, कि भई घर है तो वाइफ़ को तैयार होना चाहिए, और ज़्यादातर देसी औरतें मैंने देखा है कि जब शादी रहती है तो बिल्कुल अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती, तैयार नहीं होती। जो कहते हैं ना, एक उर्दू का फ्रेज़, सर झाड़ मुँह फाड़, उस तरह की नहीं होती हैं। So in the beginning, not in the beginning, in the mid, I was like that. मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे अच्छी लगती है जब तुम बड़ी तैयार-शैयार होती हो, एंड मैंने कहा, अच्छा, ठीक है। सो फिर मैंने अपने ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस किया, एंड आई वाज़ लाइक, जब ऑफ़िस से वो घर आते थे तो मैं बड़ी रेडी होके डोर खोल रही हूँ उनके लिए, तो वो मुझे कहते थे, आज कोई ख़ास बात है? मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसे ही तैयार हो गई हूँ। क्योंकि एक्सेप्ट करते हुए मुश्किल होती थी कि भई ये तो आप ही के कहने पे हुआ है, बट इट वाज़ नाइस। सो अब भी यही होता है कि हम लोग भी जाते हैं कभी-कभी बाहर, और वॉक पे जाते हैं एक्चुअली। आजकल तो स्नो है, मगर हम लोग वॉक करते हैं, और फिर टाइम देते हैं एक-दूसरे को, स्पेशली जब कहीं ट्रिप्स पे जाते हैं तो एक-दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। सो आई मीन इट्स गोइंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। Mashallah. Alhamdulillah. Mashallah. And Dolly? in love and romance is a big factor of your successful life. It is, celebrating little things like Valentine's, going out for anniversary, for birthdays, it's really important for each other, not for only husband, not for only like together. And the kids are very happy too when you both are going out. My kids, always very happy. Oh, mom and dad are going out. Mom and dad, they always make reservation for us, go there, enjoy this and this. Yeah, the little things. And then, sometime gesture is show also love. Like my husband, every morning he make coffee for me. He get ready my car. So that's very cute things, we do together, And then I wait for when he's like coming home, I wait for him to go gym together, so then we can talk to each other, So he doesn't like movie. He doesn't, we took, I think 1 or 2 times he was sleeping all the time. So after that, I said, I'm done. Very embarrassing, snoring. Stay home. We can watch the movies, sports and thing, But I understand only cricket, nothing else, So when cricket is playing, I watch with him, or old songs. Sometimes we sit together, we do make sure we watch, something, But that's a और daily routine. Always ready because I work, When I come home, he's home. So I'm always ready. Get ready, smart, always, So राइट, yes, little things matter, like what I said, So and I'm getting ready for myself too, because Exactly. I think I look nice, and everyone should see that, I'm healthy, I'm, pretty, not pretty, but I'm dressed up nicely, So I think it does matter, when you dress I to each other, and and then little एग्जैक्टली जैसे नबील शम्स इधर कह रहे हैं, लेकिन मर्दों को भी तैयार रहना चाहिए। मर्द कुछ खुद देवदास बने होते हैं घर में। कौन तो से मर्द ये देवदास बने होते हैं? आई मीन कौन से हैं ये? हमारे यहाँ तो नहीं है देवदास।
You're right. You're so right. मतलब वो मैं समझ सकती हूँ वो क्या कह रही है, बिकॉज स्पेशली हमारे जो देसी भाई हैं, आई एम सो Right. सॉरी टू से, मगर दिस इज एक्चुअली अ थिंग आई थिंक अक्सर, लाइक इवन माय ब्रदर्स आर गोना किल मी फॉर दिस, बट इवन आई थिंक मेरा एक भाई है जिससे कहा था अभी तो शादी हो गई दूल्हा बन गया मैं, लाइक स्टॉप इट, दूल्हा बन गया, स्टिल कीप इट अप, बिकॉज एट द एंड Yeah. ऑफ द डे बीइंग हेल्थी एंड बीइंग you know in shape is, it's, and I'm not saying कि आपको डोले शोले बनाने हैं या brolic बनना है, but at the same time at least fit होना है, that's your responsibility for your spouse, the same as your spouse's responsibility for you. It goes both ways. Just because you're a guy, you doesn't mean you can let go. You know, it goes both ways. And then Right. with the love and romance factor, I like that Ghazal and Farhana had both different perspectives. And I want to actually ask, do you think कि जो like अक्सर actually ये there's another thing that psychology says, I read a lot on this as you can tell, कि जो औरतें होती हैं they like to be pursued and men like women that they can pursue. So do you think that it makes a difference कौन romance factor करे in like the fortitude of a marriage, कि कौन ज़्यादा कोशिश करे, does it matter or it matters as long as कोई ना कोई कोशिश करे? I'll go again. So what happened is that some men are like, like my husband. He's happy with what I'm doing. Like, अच्छा तुम plan कर लो, we'll do something. He's not a planner at all. तो फिर I feel like कि मैं हर चीज़ plan कर रही हूँ, तो I'll plan this कि चलो आज यहाँ चलेंगे. And then with my schedule with work and my social calendar, it is like, I have to find a date कि जिस दिन हम दोनों मिलकर के weeknight हो या कुछ भी, हम दोनों मिलकर कुछ अकेले करें, like just me and him. And I do enjoy it and he does enjoy it a lot. So I think I plan because I'm busier than sometimes he is. So or maybe I have a better way of doing it. But we do plan together. Like हम जो plan करते हैं, like vacations भी कि चलो यहाँ चलना है, चलो यहाँ जाना है या कुछ करना है. But he gets along with it कि मैं जहाँ जो वो plan करूँगी, he likes it. So that's what. But जैसे dinner पे भी जाना हो ना, तो मैं कहूँगी कौन से restaurant जाना है. You plan, you make a reservation. तो कभी-कभी मुझे गुस्सा भी चढ़ता है. Like sometimes you tell me what to do, like But he's the kind, like okay, wherever you decide, we'll go together. So which is nice. And but sometimes I want him to plan, but no, he's not the type. So what can I do? So it's a personality factor, right? Yeah. फॉर मी हमारे यहाँ इन द बिगिनिंग मेरे हस्बैंड प्लान करते थे, फिर एक दफा उन्होंने आके बताया यार उसकी बीवी जो है वो सारा कुछ प्लान करती है, तो मुझे थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा व्हाट, मैं नहीं कर सकती? तो उसके बाद वो दिन और आज का दिन सारी प्लानिंग मैं करती हूँ. ट्रिप्स पे हम जाते हैं, सारी बुकिंग्स, टिकट्स, एवरीथिंग. इवन के घर में जो पार्टीज होती हैं, जो भी होते हैं, वो मुझे देखते हैं. मतलब आप समझें कि लास्ट जो होती है ना, वो उनकी वो होती है, ओके ठीक है डन कर दो, डिसाइड वो करते हैं. बट लाइक सारा प्लान मैं करके उनके हाथ में दे देती हूँ और मैं पूछती हूँ हाँ जी ठीक है, बस तुमने कर लिया काफी है. मगर मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है कि मैं सब कुछ करूँ और उनको नहीं करना पड़े, बस वो आखिर में ओके कर दें उसको. बट ही इज इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, सुनते हैं. और आज मैं ये कहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर जगह. अगर मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब पाकिस्तान से आते हैं, फिर आपके बच्चे हो जाते हैं यहाँ पे, इट्स लाइक टोटली डिफरेंट लाइफ स्टाइल है, तो ज़रा सा सेटल होने में काफ़ी टाइम लगता है. बट अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. अब सपोर्ट होने के बाद ये है कि प्लान पूरा हो जाता है और आखिर में उनको कहती हूँ बस साइन कर दें, आप अपना ठप्पा लगा दें एंड रेडी टू गो, एंड दैट्स इट. बिल्कुल ऐसा ही है. Dolly, do you want to add to that? Yeah, actually, I'm a planner. My husband doesn't. It's हम end पे जाकर उनको सिर्फ passport पकड़ा देती हूँ, ये passport है जो आपने लिया, and everything we have it. So पहले तो मैं खुद ही करती थी, अब मेरी बेटी and बेटा they plan for us too. Special occasion जैसे हम कैंकून जा रहे हैं, वो प्लान करते हैं कि यहाँ जाना है, आपने ये करना है. लेकिन हम प्लानर है, मेरे हस्बैंड नहीं. वो कहते हैं जहां आप चलोगे वहां. सम रेस्टोरेंट उनके फेवरेट हैं, ही लाइक देसी फूड, फिलाडेल्फिया में जाना, वाजी वाके. अगर कहूंगी ना कि कहाँ जाना है, चलो नान कबाब खाने चलते हैं, और मैं हर वक्त नान कबाब, घर में भी नान कबाब तो वो वहां जाते हैं, ही विल ईट मेरे साथ भी घर कहते हैं कोई रोटी शोटी है घर में, तो he is still like that roti shoti. So, but usually I'm the planner, but he loves whenever I plan, like Farhana said, बड़े खुश होते हैं, अच्छा मेरी
प्लान किया, सबको बताएंगे अपने I भाई know. के जी डॉली ने प्लान किया है, हम लोग वहां जा रहे हैं, वहां से वापस आए हैं, it was very good trip, you know. So he likes that, you know. Even for shopping पे भी जाना ना, मैं जाती हूँ, वो जाते हैं, तो चीजें मैं ही पसंद करती हूँ. Then he always said, oh, it was very good. फिर मैं भी पूछती हूँ कि what do you think about this dress, and you know, Right. Yeah. yeah, and which is very important. His opinion is always important for me, That, Exactly. because you know, of course, at the end, you know, he's my partner. You know, I'm with him till I died, you know, so mashallah. So he's very supportive on that, you know, always, always. He's very respectful. The best thing about him is very respectful. If I don't want to make food or I'm tired, you know, he always says, कोई जरूरत नहीं किचन में जाने की, अभी कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, नहीं तो तुम्हें मैं बेस्ट थिंग तो वो आता ही है ना उनको, अंडा टोस्ट बनाना, अंडा टोस्ट मैं बनाता हूँ, सब चाय पीते हैं, तो वो खा लेना वो. So that's very, it's better, you know, when somebody respect you, your feelings, your daily work, you know. And I think that cover everything, love, romance, cover everything in that, you know. बिल्कुल. So again, just kind of synopsis, आप लोगों को लगता है कि like, it depends on personality, मगर आप लोग back and forth करते रहते हैं between your husbands and you guys, right? Yes. I agree. I think मेरे ख्याल से again, I would go back to what I was saying. So like equal level playing field. कभी आप plan करें, कभी वो plan करें. And actually, you know, actually, भाई लोग, आप लोगों को मैं एक बहुत insightful बात बताऊंगी. ज़रूरी ये नहीं होता कि आप अपनी ग्रैंड जेस्चर में शो करें अपनी मोहब्बत और अपने प्यार और अपने इश्क को. समटाइम्स बस रिकग्नाइज करना कि इस वक्त जो मेरी बेगम है वो इस तरह के मूड में, just recognizing that having the insight to know that this is what's going on with her, or asking her how her day went, or even choti cheezein. I agree with Amara. Like these types of things are actually more romantic than koi diamond ki ring, yeah, trip to Italy. You know, they can actually be more romantic, and they can actually keep that fire burning for the long run, in fact. So And- yeah. And you know, middle of work, when I received his text that, "Are you okay? Did you eat lunch? You know, everything is okay." That usually make my day. You know, and same thing, I will do. How was your drive? Are you coming back? You know, be careful. You know, have coffee when he usually leave early. So I always said, you know, make sure you take your coffee with you. So that's little things. You know, it's really increase your love and romance. You know, that's little things. You know. yeah, little things count. Like Yeah. when you are, yeah, little thing counts. And वो डे टू डे में छोटी छोटी चीजों जो केयरिंग होती है आपकी ना, जैसे आपको कॉफी बना दी या अपने लिए पानी ला रहे हैं, आपको पूछ लिया, would you like to have a glass of water, बहुत छोटी सी चीज है, Yeah. लेकिन that does make a difference, you know. And when you're going to a party or something, you know, he always carries my purse. अगर मैं थकी हुई तो चल carry your stuff. तो मेरा बेटा हंसा, why you carrying her purse? Because she's tired ना, तो मैं, you know, but that is a little thing, very little thing. I think it's adorable, mashallah. but, Yeah. but I really admire it, you know, that you know, and you know, the thing is that हमें admire भी करना चाहिए. Exactly. बाज़ को हर चीज मिल जाती है, वो admire नहीं करते, उनको लगता है ओ ये हमारा right है. No, we should respect and acknowledge each other's feelings as well. That's Yeah, और Agreed. अपनी शो और करें कि आप उनको ठीक है, वो भाई आपका बैग कैरी करते हैं और आप इधर हैं, पाकिस्तान में होते तो कितने कमेंट्स आने थे, बीवी के नीचे लग गया है, पता नहीं कैसा आदमी है. जमीन पे लग गया है. यही मैं कह रही हूँ, ये छोटा सा जेस्चर कि ये ना सोचना कि आया अगर मेरा कोई दोस्त देख लेगा वो कहेगा कि अपनी बीगम के, जैसे पंजाबी में कहते हैं थल्ले लगा हुआ है. Like I hate this type of statements. Like it's not- respecting your spouse or recognizing what they need at that moment is not बीवी का गुलाम और जोड़ू का गुलाम. इट्स अगर बीवी कर रही है इतना कुछ, तो अगर वो आपके मियाँ का गुलाम नहीं बन रही, तो बीवी क्यों जोड़ू का, मतलब बीवी के लिए करोगे, तो why would it be vice versa? So I agree, like something like holding a purse, that would be looked down upon in Pakistan, and actually even here in our community, like that is not something to look down upon. It's like एक तरह से तुम कहते हो, you know, हम नाजुक, we are the gentler sex, so then हमें सारा सामान क्यों उठाने को कह रहे हैं? Yeah, exactly. No, you can't have it both ways. बीवी करे, वो आए और हम उनकी जैकेट पकड़ के हैंग कर दें, तो that's fine, right? हाँ, यही हस्बैंड करे ना, तो वो ऑपोजिट हो जाता है. वो opposite हो जाता है. लेकिन
करना चाहिए, ये तो करते लेकिन हैं ना, हस्बैंड्स को करना चाहिए, करते हैं। हमें थोड़ा सा पैम्पर करना चाहिए, एंड और लड़कियों को चाहिए कि उनको लाइक अपने हस्बैंड्स को बोलें कि देखो मुझे ये छोटी सी चीज अच्छी लग रही है तो कर दो। एज आई सेड, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो चीज अच्छी लग रही है वो उनको बताओ, जो चीज आपको नहीं अच्छी लग रही वो उनको बताओ। यू बोथ शुड टॉक टू ईच अदर अबाउट लिटिल थिंग्स, आई थिंक, एंड दैट डज मैटर। पर आई थिंक नाउ डेज मैंने अपने नीसेस को भी देखा है, उनके माशाल्लाह दे आर हैप्पीली मैरिड। उनके हस्बैंड उनकी बहुत हेल्प करते हैं, बच्चों को Exactly. साथ लेके जाना, बच्चों के काम करना, उनको बेड पे लेके जाना, उनको बच्चों को शावर के लिए अंदर करना, एंड दैट्स रियली गुड. Yeah. That's really good. That's why, because they both work, it's a hard working woman's here, and then ghar ka bhi dekhna, that they always, and I love it. I wish my son will do the same thing with his wife, help her, and with the daily routines, set up with the kids, and going forward, it should be. It's very good. I will think same thing for my son and for my daughter. So on that note, and this is a question that I had not planned, and I'll go into our last question in just a few. आपने बात किया कि I hope my son also plans. So obviously, हमारे culture में extended families and ससुराल is a factor. The ladies will testify. I did not plan this question, but because I thought it might be a little controversial. But hey, who am I if I'm not controversial, right? So, so in your opinion, आपका क्या ख्याल है? अब obviously dynamics change हो रहे हैं. दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं. रोल्स उस हिसाब से चेंज हो रहे हैं, जो आप एक दूसरे को आप एक दूसरे के लिए करते हो, जो आप रोल अदा करते हो घर के अंदर एंड बाहर, वो सारा बदल रहा है। तो उस हिसाब से और भी चीजें बदल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंडेड फैमिली एंड ससुराल, जैसे oftentimes अब many girls don't want to get married in extended families, even though उसके भी बहुत benefits हैं. So what do you guys think about that? Like in a role like this where a husband, and I'm not asking about sir, I'm asking about a husband, right? What kind of role can a husband or a wife play if living in an extended family? I feel like Ghazal is going to have the answer because I hear it right here already. But what do you think? If you're living in an extended family, what needs to be there as well? Okay, अगर आप फैमिली में रह रहे हो, that you're talking about extended family में marriage or extended family में के साथ रहना? Extended family के साथ रहना. Okay, so ससुराल में रहना. It is like, I think it's upon the husband to make sure, because वो उसका घर होता है जहाँ वो एक लड़की को लेकर आता है, तो make sure कि उसके rights के ऊपर कोई, nobody is crossing the boundaries. वो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेक श्योर कि वाइफ जो है वो उसमें काम जल्दी से एडजस्ट हो जाए. तो अब लड़की को देखो, दो फैमिलीज डिफरेंट, इवन लाइक टू सिस्टर्स गेटिंग मैरिड, उन दोनों का घर डिफरेंट होगा, बिकॉज इवन दो वो सेम पेरेंट्स के बच्चे होंगे, बट एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, हस्बैंड होते हैं, तो घर का माहौल हर फैमिली का डिफरेंट होता है. तो द गर्ल हु इज कमिंग फ्रॉम अनदर फैमिली लिविंग इन योर फैमिली, आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज मोर on the husband than the wife, and the wife should not let anybody cross the boundaries. I'm very I feel like it's very important कि she should know the boundaries. अब किसी का ख्याल करना और किसी के, जैसे तुमने बोला एक वर्ड पंजाबी का, तले लग जाना. like do it for everybody, but make sure कि आपको भी लोग समझें जो आप हैं. तो एक लड़की, it's husband who gives that respect and creates that for the wife, and that like ससुराल, like that's what you're saying, right? बिल्कुल. Farhana and Dolly, do you guys want to add to that? मैं भी सही ये कहूँगी कि हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरह मैनेज करता है अपनी वाइफ को जब वो उसके घर आ रही है और रह रही है ससुराल में. लाइक जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड तो यहीं आ गए थे, क्योंकि मैंने बताया कि मेरी शादी इतनी बहुत शॉर्ट टाइम में हुई थी. तो मैं अपने ससुराल में तकरीबन 8 महीने पाकिस्तान में उनके साथ रही हूँ, कराची में. और बहुत अच्छा टाइम गुज़रा हमारा, और सारा डिपेंड करता है कि हस्बैंड पे कि वो किस तरह आपको आप भी फ़ॉलो करें अपने हस्बैंड की बात, और बी रिस्पेक्टफुल विद एवरीबॉडी, और वो भी आपके साथ उसी तरह रहेंगे. मगर प्रॉब्लम जब होती है जब थोड़े से डिफरेंसेस हों और आप उन डिफरेंसेस को ज़रा-सा फेस करने की पोज़ीशन में ना हो. तो मेरा ख़्याल है कि ग़ज़ल बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और इसी तरह ही मैनेज कर सकते हैं हम अपनी फैमिली को वहाँ पे रहते हुए. आई मीन दैट्स गुड.
In Dolly, my, do you want to answer that? in my opinion, respect, when husband will respect her feelings and she will respect his family, his relatives. So everything, I think there's no conflict. Just respecting each other, that's my thing. And of course, the three factors involved. ससुराल वाले भी, लड़की भी और लड़का तीनों इन्वॉल्व होते हैं. तो तीनों को एक दूसरे को स्पेस देनी. लड़की दूसरे घर में जा रही है, उसको भी उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए. सेम थिंग, आदमी हस्बैंड को भी अंडरस्टैंड करना है कि शी केम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट माहौल है, डिफरेंट फैमिली है. उसको भी स्पेस दे, उसको भी तरीके से रखे. सेम थिंग ससुराल वाले भी, उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि दे जस्ट गॉट मैरिड, उनको स्पेस दें, उनको उनके अच्छे देने, उनको गुजर, उनको एंजॉय करने दें, और बच्ची को भी टाइम दें. एंड देन दिस इज लाइक सेम थिंग, compromise with each other, all three factors compromise with it. Agreed. वो एक इंडियन ड्रामा है ना जो पता नहीं कितने बरसों से चल रहा है, सास भी कभी बहू थी. So I think मैं सिर्फ ये कहूंगी in the perspective of the ससुराल वाले, but also I think एक जो husband होते हैं, just like आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी, and more often than not, I'm not saying पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, sometimes situation different भी हो सकती है. Everybody comes with their own personality factors. However, एक हस्बैंड को आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू आर द शील्ड, यू आर द मुहाफिज ऑफ योर बीवी, स्पेशली एक ससुराल के अंदर. एंड अगर आप चाहते हैं कि वो ईगो, मतलब वो रिस्पेक्ट रहे, देन यू मस्ट be there for your spouse in any way possible, in every way possible. And if there's something that she's not understanding, then explain to her, and inshallah it will be great. So coming back to why I would think that even especially आजकल अगर young couple कोई शादी कर रहा है तो ससुराल is very practical, financial, independence or codependence. Like for example, कुछ फैक्टर्स हैं जो आजकल कहते हैं कि स्पेशली अफेक्ट कर रहे हैं शादी को. तो देयर्स, आई लाइक टू कॉल दोस फैक्टर्स सरमाया. सो नंबर वन, हमारे ओल्डर टाइम पे कहा जाता था कि जो बच्चे, अगर आप चाहते हो, इट्स अ टू पार्ट क्वेश्चन, अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी सोलिडिफाई हो जाए, तो नंबर वन क्या करो, बच्चे करो. एक दफा मैंने एक अपनी फ्रेंड को ये कहा था, तो उसने कहा था दिस इज अ वेरी देसी सॉल्यूशन बीनिश. मगर देयर इज अ देसी सॉल्यूशन फॉर अ रीजन, राइट? Do you guys agree with that? Do you think kids bring a solidifying factor to your shadi? Why or why not? And what are your thoughts on it? And also financial situations, financial hardships. What advice would you give to girls out there? Because it does often, unfortunately, tend to fall on the guys because it's expected. शुक्र है अल्लाह का थोड़ी सोच बदल रही है, but अभी भी थोड़ा सा बदलने का वक्त रहता है. अगर कोई लड़की फेस करती है, मैं भाइयों से बात करती है, लड़की कोई फेस करती है फाइनेंशियल हार्डशिप in a marriage, how should she deal, and what should she, how should she compromise? What advice would you give to girls out there? So two-part question: kids, sarmaya, kids, and paisa. Okay. If you feel that kids will bind your marriage, I don't think so. No. I have seen so many marriages broken right after the kids because वो दोनों ready नहीं थे अपनी responsibility share करने के लिए. So पहले तो आप अपने एक दूसरे को समझो ना, एक दूसरे को किसी बच्चे को इस दुनिया में लाने से पहले आप ये सोचो कि हमें इस बच्चे को पालना है together, because वो बीवी का बच्चा नहीं है, वो हस्बैंड का बच्चा, वो दोनों का बच्चा है. तो ये चीजें होती. एंड देन लॉट ऑफ बच्चा रात को सो नहीं रहा है, दोनों को सुबह जॉब पे जाना है, दोनों परेशान है कि कौन उठेगा कौन. थिंग्स डू हैपन जब छोटा बच्चा होता है. बड़े बच्चे होते हैं, बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं. तो नो, आई डोंट थिंक किड्स बाइंड अ मैरिज. दैट आई पुराने जमाने की कहानियां हैं. बिल्कुल. और सेकंड क्वेश्चन वाज And financial hardships. How much do they affect a marriage, and how can one deal with so they don't affect as much? It does affect a marriage, but अगर आप थोड़ा सा एक दूसरे को समझें और रिस्पेक्ट दें. एंड अप्स एंड डाउन्स हर शादी में होते हैं. इफ यू फील कि ये अभी है, बाद में नहीं होगा, ट्राई टू मेक इट वर्क विद टुगेदरनेस. अगर दोनों आप कमा रहे हो या आप दोनों साथ हो, अंडरस्टैंड करते हो एक दूसरे को, तो यू कैन सॉल्व द इश्यू. यू कैन बट बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, एज फरहाना ने कहा, पेशेंस नहीं होता लोगों में. तो फिर वो चीजें जो होती हैं वो बिखरनी चली जाती हैं बच्चे होने के बाद भी, और फाइनेंशियल इश्यूज हो या ना भी हो. तो यस, इट डज, एंड समटाइम इट डज नॉट, इफ यू नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड.
Farhana? जी, मैं ये कहूँगी कि ये बात ठीक है कि बच्चे जो हैं, बच्चे होने के बाद भी मैरेजेस टूटती हैं, मगर अभी भी हमारे कुछ फैमिलीज़ में ऐसी मेंटालिटी है कि बच्चे हो जाते हैं, उनकी आपस में बन नहीं रही, मगर वो बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सो आई विल से कि दोनों चीज़ें हैं और कुछ फैमिलीज़ अभी मैं जानती हूँ ऐसी फैमिलीज़ को कि उनके बच्चे हैं और उनमें लाइक डिवोर्स हो गई है और ऐसी भी कुछ फैमिलीज़ हैं कि बच्चे हैं और आपकी शादी जो है वो इतनी कोई सक्सेसफुल नहीं है, मगर बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो तो आई मीन दोनों चीज़ें हैं, पेशेंस और कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ में। दूसरी बात जो फाइनेंशियल है हार्डशिप्स हैं, इधर ज़ाहिर है दोनों जॉब्स कर रहे हैं या अगर दोनों नहीं जॉब कर रहे, आपका एक पार्टनर जॉब कर रहा है, हस्बैंड जॉब कर रहा है, तो मेरा ख़्याल है कि बेस्ट वे ये है कि आप अपना बजट बनाओ और अकॉर्डिंगली उसको देखो कि आपको क्या किस तरह करना है एंड देन यू गो फ्रॉम देयर राइट अभी कोई चीज़ जो प्रॉब्लम लग रही है हो सकता है वो कुछ अरसे के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मगर वही है की जो है वो पेशेंस है आपकी और कॉम्प्रोमाइज़ है। Dolly? हाँ जी, ये बच्चों की बात जो है ना, दैट इज़ देखिए फरहाना सेड कि अच्छा भी है और बुरा भी है। लेकिन जैसे व्हेन आई गॉट मैरिड, सो वी वर प्लानिंग लाइक आफ्टर 2-3 years, व्हेन वी विल सेटल आवर हाउसेस डन एंड एवरीथिंग. But after 6 months, everyone was making us guilty, like बच्चा ही नहीं हो रहा. ये तो सही है। आई मीन ये तो पाकिस्तानी हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम एग्जैक्टली. नहीं हो रहा। मेरी सास कहाँ गई है कि वो आज तो पाक पतन चली गई है दवा मांगने के लिए. आज वो सीरियसली इट वाज सो एम्बैरेसिंग कि हम लोगों को लगे जैसे हम चोर बन गए हैं कि हमने किया. एक शादी हुई है अभी हम लोग, क्योंकि शादी हमारी लाहौर में हुई लेकिन मेरे हस्बैंड की जॉब इस्लामाबाद थी, तो हम अपना घर अरेंज कर रहे थे कि वहाँ सेट हो जाए, उसके बाद जाके व्हाटएवर वी डिसाइड वी विल डू देयर, राइट. पर ना जी, ना 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 ना, ऐसे बैठ के मेरी माँ, इधर मेरी सास, कि जी कर लो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. खैर हमने इतना तो नहीं उनको सुना, किया अपनी मर्जी से. लेकिन देयर वाज वेरी पीयर प्रेशर ऑन मी. या बहुत ज्यादा हमें था, इलाज के लिए चले जाओ, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो. Astaghfirullah. लेकिन माशाल्लाह वी टुक आवर टाइम, एंड देन वी वर हैप्पी. एंड दैट इज राइट, किड्स आर ब्रिज. समटाइम आप कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप बहुत तंग आ जाते हो, फल्ला मैं नहीं रह सकती, ये नहीं कर सकती. लेकिन जब आप बच्चों को सोचते हो ना, ओ, वो टेम्परेरी सिचुएशन होती है. लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई कि जी वाकई छोड़ना पड़ना है. लेकिन नाउ डेज द गर्ल्स पेशेंस तो है, लेकिन वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उनको कोई कहे भी. नो नो, बिल्कुल एक दूसरे के साथ कि जी वो बच्चों की भी परवाह नहीं करती. सो दैट्स व्हाई दे शुड थिंक कि जी उनको कोई प्रॉब्लम है, देन दे शुड हैव किड्स, बिकॉज इट्स नॉट फेयर विद द किड्स. किड्स एग्जैक्ट कोई उधर जा रहा है, कोई स्टेप मॉम है, कोई स्टेप फादर है, कोई नाना के पास, कोई दादा के पास. सो इट्स नॉट फेयर. गाइस थिंक अबाउट इट. आप लोगों को कि लव मैरिज हो रही है, आप लोग कंप्रोमाइज, दे ऑलवेज टॉक अबाउट फाइनेंशियली, घर मैं लूंगे, वो चलाएगा, इस तरह करेंगे. लेकिन थिंक अबाउट द किड्स ऑल्सो. Okay, when you will have a kids, when you're financially, you can support them, because nowadays एक बच्चे को, वो तो अल्लाह मियाँ कहता है कि बच्चे के साथ रिस्क भी आता है, लेकिन आपको साथ हेल्प भी चाहिए होती है. और secondly, जो financially thing है, that is a main factor of your successful life. There's a lot of hardship and financially issue will come in your life, but it doesn't matter कि आप उस पे शादी तोड़ दे, ये कर दे. You listen to each other, make a plan, and make a budget, like how you will raise your kids, what you need for their education, what you need for your house. It's all sitting together and listening each other. और फिर अगर आपको जरूरत है तो टॉक टू ईच अदर के मैं भी जॉब कर सकती हूँ, वो भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह सेव भी कर सकते हैं, हम ये इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं. दैट्स ऑल. लोग अपने हस्बैंड एंड वाइफ की एक स्पेशल थिंग होती है जो वो डिस्कस करते हैं. नोबडी एल्स कैन. कोई रिलेटिव नहीं, कोई कुछ नहीं आके इसमें ऐसे, इस बिटवीन अस. या हम लोगों ने जो डिस्कस करना है कि बच्चों के लिए हमने ये रखना है, अपने लिए ये रखना है, ये हमारा होता है, तो वी कैन कम टू कंक्लूजन, like just discussing with each other. So I think we always do that. अगर हमारे पास $100 है तो हम डिस्कस करते हैं इसको कहाँ खर्च करना है, इसको कहाँ रखना है, कैसे हम इसका कर सकते हैं. That's always discussion.
Yeah. आई थिंक फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अपनी बजट में रह के हम अपने पाँव फैलाएं तो एब्सोल्युटली आई थिंक वी विल बी फाइन इंशाल्लाह. I think one thing we should all remember is both of these things, financial hardship, financial independence, or success, and kids are all part of your kismat. Number one. हमारा दीन तक ये कहता है यार कि yes, कोशिश financial की कोशिश भी की जा सकती है, मगर actually पैसा किस्मत का खेल है. आएगा जाएगा वो सारा किस्मत का खेल है. और बच्चे स्पेशली किस्मत का खेल है. आएंगे जाएंगे. And but with that said, I do want to just talk about very briefly because हमारा time running and I really want to do my conclusion is that जो खातून हमारी स्पेशली कल्चर में, हमारी स्पेशली सोसाइटी में, कोई भी औरत एंड आदमी फॉर दैट मैटर, मगर स्पेशली औरत अपनी खुशी से अलग नहीं होती. यू नो, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट. आई थिंक हमें इतना ज़्यादा कहा जाता है ग्रोइंग अप दैट वी मस्ट, यू नो, अभी भी कुछ फैमिलीज हैं जो कहती हैं अपनी बेटियों को कि तुम्हारी यू नो मर के वापस आना, लाइक नॉट मर के, बट यू नो व्हाट आई मीन, लाइक you're there forever. So we should always remember that. Like अगर कोई खातून को कोई स्टेप उठाना पड़ रहा है, it's not because, and that's why I actually want to have this, because there is this thought that girls these days don't have patience. But then with that said, divorce has become less taboo as it was 20 years ago, 30 years ago, because now, yes, women are working and women realize that at the end of the day, if the respect is not there, if the love is not there, or if it's an abusive relationship, they don't have to put up with it for such a while, right? So ये चीज़ हमेशा हम पंजाबी में एक और बात कहते हैं, आप यहाँ जाने थे वाप यहाँ जाने. It means like whoever is living in that situation knows better why they did what they did, right? So we must always remember that, and we should not, you know, try to judge anybody. But with that said, great discussion, ladies. I just absolutely love you guys all. You've offered such great insight into everything for everyone out there. And does anybody want to add anything? Oh, very quickly, one advice you would give to yourself if you go back and आप नई नवीनी दुल्हन हो, लाल जोड़े में बैठी हुई हो, क्या advice दोगी आप? Very quick, जल्दी Ghazal. Communication and respect. Yes. Like, you know, you have to have a communication, open communication, and you know, and respect. Respect is very important. In my That comes, yeah. respect and sabr, two things, bas. And then you maybe कहूँगी communication and forgive quickly. बात को लेके बहुत देर तक नहीं चलना है. let it go. बात करें, डिस्कस करें और खत्म करें. That's it. गाना चाहिए, let it go, let it go. Let it go. बिल्कुल. Let it go. But it was pleasure to talking to you, all of you, and listening to you guys. It was amazing, mashallah. And, Thank you, Beenish. No worries. Thank you. And on that note, as we raise, I would like to just very quickly remind us, each of us, as we raise our daughters and or bid farewell to our sisters on their wedding day, we must supply them with not only recipes and a book of do's and don'ts post-marriage, but knowledge of self. Yes. And moreover, capability and belief in oneself. The fact of the matter is, fairy tales disappear and the nights of revelry with friends and family come to an end. But what carries forward amongst the trials and adjustment one must go through to as a bride or groom or husband or wife is the insight to not only recognize and accept and hopefully love the nuance of the other person that you are now living with, but also of oneself in this we, in this new us. The fact of the matter is, no one is perfect, but a successful marriage is not about seeking and loving a perfect person, but in fact, seeking and loving a person despite their imperfections. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all the peace we seek through not only our significant others, but within our own selves as well. Inshallah. Okay, thank you so much, guys. आपको पता था मैंने इसका conclusion तो करना है. ठीक है then. Allah Hafiz, everyone. Take care of yourselves. Thank you. Bye-bye. Take care. Allah Hafiz.